Back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in today's class, we're gonna start with a new chapter for class. This is for class 8th, Geography, Human Resources. So we're gonna study this chapter, Human Resources, for class 8th, right? So we'll be studying about density, distribution of population. What is population? Some important terminologies, that is, birth rate. What is death rate? Birth rate, right? Death rate. So all these terms, migration, so all these we are studying in this chapter, right? What is the concept of density? What is distribution of population? How can you define it? So in this chapter, we're gonna learn about these things. So let's start with the introduction part. So people are nation's greatest resource. हम लोग जो हैं हम मतलब एक ऐसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स नेशन के लिए सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स है इट्स पीपल with the demand sorry guys, I'm so sorry. It is people with the demands and abilities that turn nature's bounty into resources. नेचर की जो रिसोर्स होते हैं नेचर नेचर की जो चीजें होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं रिसोर्सेज में बदल देते हैं hence healthy educated and motivated people develop resources as per their requirements. तो जो एजुकेटेड लोग हैं हम जैसे पढ़ लिख के लोग हम हेल्दी हैं हमारा हेल्थ अच्छा है हम मोटिवेटेड है हर चीज करने के लिए तो हम अपने रिसोर्सेज को अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करते हैं डेवलप करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अदर रिसोर्सेज जो है वो अलग मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते ओवर द वर्ल्ड एंड therefore their educational levels age and sex तो जेंडर मतलब किस चीज में डिफर करता है सो अलग मतलब उन एजुकेशनल लेवल जो है उनका एज है ह्यूमन का उनका जेंडर तो डिफर करता है द नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स also keep changing तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एकदम चेंज होता रहता है हर दिन so government of India has a ministry of human resource development which was created in 1985 with an aim to improve skills. This just proves how important people are as a resource for the country. तो ये हमने पढ़ा कि हम humans जो है हम as per requirements जो है हमारी है ना हम उसे यूज करते हैं हम देखते हैं कि सबका मतलब जो ह्यूमन जो रिसोर्स होता है वो अलग चेंज होता रहता है राइट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है उनके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट व्हिच वाज क्रिएटेड इन 1985 सो what was their aim to improve people's skills लोगों की जो skills है ना इनके कंट्री में जो people humans ये improve करें so that's it for introduction. Let's study distribution of population. तो हम पढ़ेंगे डेंसिटी पढ़ेंगे हम लोग समझेंगे एंड देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में कैसा मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब हाउ इज इट द पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्या पैटर्न क्या है तो a way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution.
सो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जब लोग कैसे मतलब यू नो स्प्रेड है अक्रॉस द अर्थ सर्फेस अर्थ लोग कैसे स्प्रेड है. So more than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface. So in the world is extremely uneven. Sorry, uneven since some areas are very crowded and some areas are sparsely populated. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe, and Northeastern North America. Almost three quarters of the world's people live in two continents, Asia and Africa. Of the 60% of the world's people stay in just 10 countries, and all of them have more than 100 million people. 10 countries में रहते हैं and 10 countries में 100 p मतलब 10 countries में रह के 100 population 100 million m dot p, right. तो 10 ये डिस्ट्रीब्यूशन था कि हाउ कितने मतलब कौन से कॉन्टिनेंट्स में मोस्टली रह रहे हैं एंड कौन से मतलब कितने कंट्रीज में रह रहे हैं. The population density is the number of people living in a unit area of the Earth's surface. It is normally expressed as per square kilometer. Square kilometer में उनका एक्सप्रेस किया जाता है मतलब the average density of population in the whole world is 52% per square kilometer. South Central Asia has the highest density of population, followed by East and Southeast Asia. तो डेंसिटी क्या होंगे मतलब पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया, एक यूनिट जो एरिया है वहाँ लोग रह रहे हैं, दैट इज दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी. अब क्या हो रहा है हम पढ़ रहे हैं अबाउट कि साउथ सेंट्रल एशिया जो है highest density of population followed by Southeast and Southeast Asia. And इसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर. तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के बारे में. अब लेट्स स्टडी इन ब्रीफ. हम लोग बाद में अभी के लिए हम ब्रीफ में बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. और कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. जोग्राफिकल फैक्टर्स आ जाएंगे आपके, टोपोग्राफी आ जाएगी, क्लाइमेट आ जाएगा आपका, सॉइल आ जाएगा, वाटर, मिनरल्स. तो ये सब आपके फैक्टर्स. जोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब लोकेशन वाइज हो सकते हैं. अब टोपोग्राफी मतलब माउंटेन्स हो गया, बीचेस हो गए, प्लेन्स हो गए, है ना. टोपोग्राफी आ गई इसमें. क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट है, इज इट एक्सट्रीमली हॉट और इज इट एक्सट्रीमली कोल्ड या मॉडरेट है. सॉइल मतलब कैसा तरह का मिट्टी है ना फॉर द एग्रीकल्चर, राइट. अब आ जाएगा आपको वाटर कि फ्रेश वाटर अवेलेबल है उस जगह या नहीं है. मिनरल्स आ जाएंगे, है ना. तो these are the factors which affect the distribution of population. अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे. along with हम will study social, cultural and economic factors too. So that's it for today guys. I hope you like my video. Please subscribe to my channel and please do comment whether what should I make videos on which topic you want me to make videos about it. So please do comment and I'll see you soon. Thank you.